कि अगर जितना जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो परफॉर्म करें और हम यही कोशिश कर सकते हैं। बट जो चीज़ अच्छी चल रही है हमारी कोशिश होगी कि हम उसको और अच्छा बेहतर कर सकें। और क्या टोटल देख रहे हैं सरफेस को? ऑब्वियसली देखें, नाइट का मैच है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि 180 तक हम इसको लेके जाएं और उसके आगे जो भी है एसेस करें कंडीशंस, अगर और अच्छा विकेट है, क्योंकि इधर थोड़ा सा हमें ये इशू हो रहा है कि हर रोज़ डिफरेंट विकेट खेल रहा है। तो अगर अंदर जाके आपको एसेस करके लगता है कि ये 190 प्लस है तो ऑब्वियसली हम विल गो फॉर दैट। कोई चेंजेस आपकी साइड में? वन चेंज है, शरून की जगह जुनेद आए हैं। चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे हैं, हैप्पी विद द डिसीजन? हाँ, हमने टॉस जीत के भी हमने बॉलिंग करनी थी और ये अच्छा हुआ कि वो लोग खुद बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बैटिंग की बात करें, स्ट्रगल होता नज़र आया पिछले मैच में भी, उससे पहले भी, तो क्या फिक्सेस आपके लिए हैं उसमें? बिल्कुल हमने थोड़ा स्ट्रगल किया है बैटिंग में और हमारे मीटिंग में यही बात हो रही कि इस जैसे विकेटों पे आपने पार्टनरशिप लगाना है। तो यही बात हुई, इंशाल्लाह आज देखेंगे थोड़ा पार्टनरशिप लगाते, जहाँ इस ऐसे विकेटों पे आप जितना टाइम लेते हो तो आपके लिए फिर बाद में ईजी हो जाता है। और कोई चेंजेस आपकी साइड हाँ, में? 2 चेंजेस है, बिलावल भट्टी इन है इमरान जूनियर की जगह और फैज़ान इन है शहजाद की जगह। चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। The news from the center is that NURPUR Lions have won the toss and they have opted to bat first. The best and thank Thank you. you, thank you, thank you. Imamul Haq for NURPUR Lions. And
तुझे कोई सच में खोए चाहे दूर के तुझे का हम साथ हैं वक्त के साथ रह गए हम तुम इतना कुछ सीखे और सिखाए थे इस दुनिया के जाल असली दिखाए थे दिल कभी भी रखे उन लम्हों की ख्वाहिश जो सब अपने हमारी दिखाए थे जुदाई में
Very warm welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium, and it's match number 12 of Barrier Town Champions Cup T20. NURPUR Lions will be taking on UMT Markhors. Well, it's the second of the doubleheader. Earlier on, Lake City Panthers put up 168 for 7 thanks to a brilliant knock of 73 from Haider Ali, contributions from Mubassir and Umar as well. Muhammad Ali with 4 for 28 was amongst the wickets. Allied Bank Stallions, who were cruising at one stage, took the game into the final over as they went over the line with 2 deliveries to go. Harris once again starring with the bat, 61, the half century for the skipper. It's getting very tight at the top. Remember, one team will go directly into the final and 2 underneath will go for a qualifier. Allied Bank Stallions sitting pretty at the top with a decent net run rate as well. UMT Markhors will have a chance to join them at the top or better them on run rate. It's plenty of entertainment in the first game. It's Sunday afternoon. It's a bit murky in Rawalpindi, but there is a very good crowd settling in, having an afternoon munch. Nicely wrapped up, all these crowd, because it's pretty cold. Pitch was very good for the first game. Let's see if we can notice any changes for this second game. Bit of scuffing of the bowlers' foot marks, but generally the surface itself been pretty decent. It got quite good towards the back end of the NURPUR Allied Bank Stallions innings rather, and it promises to be a very good pitch even now. Our colleague Marina Iqbal was with both the captains in the middle just a short while ago for the coin toss. Conditions are overcast and chilly, but we're all set for a thrilling encounter between UMT Markhors and NURPUR Lions. I've got the captains with me, Imamul Haq for NURPUR Lions, and Iftikhar Ahmed will be leading UMT Markhors, and we have Iqbal Sheikh as our match referee. Imam, go for the flip. Head. Heads is the call. And tails it is. Imam, क्या करेंगे और क्यों? We're gonna have bat first. कंडीशंस थोड़ी सी ओवरकास्ट हैं, तो ये एक टैक्टिकल डिसीजन है या देखा है कि डिफेंड हो रहा है यहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंड हो रहे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे डिसेंट रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद जो है ऑपोजिशन को जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज नहीं है. अगर आपकी अच्छी डिसेंट बॉलिंग है, अच्छी आप लेंस हिट करते हैं, तो इतनी आसानी से हिट लग नहीं रही. बैटिंग की आपने बात की, ओपनर सेट हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये कंसर्न है? हम चाहते हैं मिडिल ऑर्डर्स ना ही टेस्ट हो तो अच्छा है, बट द थिंग इज, देखें अब ओपनिंग अच्छी चल रही है, इसलिए आप ये कह सकते हैं टेस्ट नहीं है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही. तो आई विश, हमने कोशिश की है कि अगर जितना जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो परफॉर्म करें, और हम यही कोशिश कर सकते हैं. बट जो चीज़ अच्छी चल रही है, हमारी कोशिश होगी कि हम उसको और अच्छा बेहतर कर सकें. और क्या टोटल देख रहे हैं सरफेस पे? ऑब्वियसली देखें, नाइट का मैच है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि 180 तक हम इसको लेके जाएं, और उसके आगे जो भी है एसेस करें कंडीशंस, अगर और अच्छा विकेट है, क्योंकि इधर थोड़ा सा हमें ये इशू हो रहा है कि हर रोज़ डिफरेंट विकेट खेल रहा है. तो अगर अंदर जाके आपको एसेस करके लगता है कि ये 190 प्लस है, तो ऑब्वियसली हम विल गो फॉर दैट. कोई चेंजेस आपकी साइड में? वन चेंज है, शरून की जगह जुनेद आए. चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू. इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे हैं, हैप्पी विद द डिसीजन? हाँ, हमने टॉस जीत के भी हमने बॉलिंग करनी थी और ये अच्छा हुआ कि वो लोग खुद बैटिंग कर रहे हैं. थोड़ा सा बैटिंग की बात करें, स्ट्रगल होता नज़र आया पिछले मैच में भी, उससे पहले भी, तो क्या फिक्सेस आपके लिए हैं उसमें? बिल्कुल, हमने थोड़ा स्ट्रगल किया है बैटिंग में, और हमारे मीटिंग में यही बात हो रही कि इस जैसे विकेटों पे आपने पार्टनरशिप लगाना है. तो यही बात हुई. इंशाल्लाह आज देखेंगे थोड़ा पार्टनरशिप लगाते, जहाँ इस ऐसे विकेटों पे आप जितना टाइम लेते हो तो आपके लिए फिर बाद में ईजी हो जाता है. और कोई चेंजेस आपकी साइड में? 2 चेंजेस है. बिलावल भट्टी इन है इमरान जूनियर की जगह, और फैज़ान इन है शहजाद की जगह. चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू. The news from the center is that NURPUR Lions have won the toss and they have opted to bat first. NURPUR Lions will become the first team who won the toss and elected to bat first. Imamul Haq. Iftikhar wanted to bowl as well, so both the captains got what they wanted actually, and that is very interesting to note. We'll get in
Pakistan's former skipper Salman Butt, who's alongside me, and we'll have a quick look at the teams. Welcome along, Salman. Thank you, Shaji. And NURPUR Lions have a stable lineup. Just the one change that they have, Junaid comes in. He's a fast bowler, and I believe he's a left armer. So this was something which was missing in this side. Rest of the side remains the same as the top order, who've been getting good starts. Imam, Hassan, and on in this side, I think they have one very good change. Faizan comes in. He's a very, very handy player and a person who has a lot of strokes up his sleeve. The rest remains the same. First time that UMT Markhors have made any changes to their playing 11. Faizan for Shehzad and Bilawal Bhatti coming in for Imran Jr. Teams have made it to the middle. Both the umpires and Imam ul Haq, who's been in very good form in this tournament. That average of 33, and the strike rate is always on the up, 123, just 28 years of age. Imam ul Haq, no hundreds for him in this format just yet. Prolific in 50-over cricket in terms of hundreds. But this man on your screens have been a revelation. His stroke play and his stroke making has been terrific in this tournament. Very young, 22 years of age. Tall, imposing figure. Very, very talented youngster. Akif to start off with a slip, and 4 men in the ring on the offside. And on the leg side, there's a square leg, which is a bit closer to the mid-wicket position. As Imam ul Haq prepares to take on Akif, and the umpire calls it play. Interesting contest. Faisal Afridi calls everything is ready to play. The cracking stroke. Wow. Picked up the length so quickly and smashed it away. Imam ul Haq off the mark in a spectacular fashion. A very dismissive start this by Imam ul Haq. Just picking Akif off length and just placing it through mid-wicket and mid-on. Great shot. And he seems like he's been batting outside the ropes. Has come in watching the ball like a football. More heat on it, but wayward. No chance for Khwaja Nafe. And this is a rollicking start already for NURPUR Lions. A bit of at times the bowlers can get double-minded while they reach the position of release. If they're not decided, then this is what happens. Looking to bowl short and also wanting to bring the ball back in, and in the end bowling a wide, which is a very wide one. This one is on target as Imam plays it with soft hands for a single. Indifferent start for Akif. That first delivery was really a nothing delivery. Just put it on a length. And Imam, who's quick, trusting the bounce, put him away. Second delivery, Akif realized the need to put more heat on it, but then lost it completely. Third time lucky. But now he's got a right-hander to contend with in the form of Hassan Nawaz, who's really been impressive in this tournament. Got a half century, but he got starts in every game and he looked at ease against the pacey and bouncy ball. This will be a good contest. Akif warming up to the task. Wow, what a stroke. Don't bother chasing those here at the Pindi Stadium. This is a classic straight drive. No matter which format you're watching, whenever you see a straight drive, it's so pleasant, so pleasing to the eye. And Hassan Nawaz, he's been brilliant with the short ball, and now playing this fuller ball to perfection. Full face of the bat and well timed. So NURPUR Lions are off to a flyer. 14 of just the 3 deliveries
of the first over. A bit of a concern for the UMT Markhors. They wanted to bowl first, Shaji. That's what Iftikhar said at the toss, and Akif has gone round the wicket. Wide of the crease, nicely riding the bounce was Hassan Nawaz. It's very interesting. In all games, we've seen Akif Javed go around the wicket very quickly. He's done that and he's been successful. If you remember, he dismissed Yasser around the wicket, a ball that came in with the angle and just straightened up. It was a classic dismissal. And Hassan Nawaz, well, he's done pretty well. He played this delivery on top of the bounce. And this is a great hit. Down the ground, picking his length and just hitting it straight back to the bowler. And who seemed to have no chance of stopping that. He read the plot very well, Hassan Nawaz. He was expecting Akif to cramp him. Look at that front foot, opened up and flat bats him. It's never been a problem for him to get over the bounce. His hands pretty high, and a terrific smash once again. Hassan Nawaz, talking about his tournament, he's just got 150, but he's got starts in every game. Another neat looking flake. One bounce to the fielder. We'll have to wait and see. I think the fielder did get a knock in. The ball bounced right in front of him. First over done, a very expensive one. Nurpur Lions 19 for none. On a gloomy day, the lights have been turned on, probably earlier than normal. But we'll not be complaining because it's going to be spectacular when these lights take a full effect. Iftikhar Ahmed, the skipper, decided to bowl. And the wicketkeeper, I think, Khwaja Nafib, wants his helmet. Probably he wasn't ready for this ploy, let alone the batters. It's Sunday afternoon here. We had the best crowd of the tournament so far, and they watched a very entertaining game, the first one. It's cold, you can see plenty of jackets, warm hats, caps, the hoodies, good sprinkling of youngsters as well, both boys and girls. Very nice to see. Iftikhar deciding to attack from the other end by himself. Very nearly the edge could have been found. Hassan going on the back foot. It will be interesting, Shaji, how Hassan plays Iftikhar, because he has long levers, a big range, and with the ball coming straight on, mid-off up in the circle, there's a chance that could be taken by the batter. Iftikhar couldn't prevent the single. Yeah, the angle that Iftikhar chose around the wicket to the right-hander. Probably he's looking to slide the ball away from him and tempt him to hit over mid-off. It'll be different though for Imam. We'll have to wait when Hassan comes back on strike. But Imam, long off his back, and there is a deep mid-wicket, so no protection in the deep on the offside. Mid-on is up. Will Imam be tempted to go against the spin? Oh, that's an edge. But Imam will take the boundary. The runs continue to flow in these first couple of overs. Was width on offer, and Imam didn't get it where he wanted, but he'd take the result.
back onto his good areas. Iftikhar, Imam picked him off for another run. It's 25 and we are still inside the second over. Just 10 balls into the innings. Great start for Nurpur Lions. Yeah, well timed once again. He is looking to go over the mid-off that is in the circle. He was trying to create room. Tahar very cleverly dragged it a bit short. Hassan has his eyes over there as the umpire just checks the ball once again. Maybe there's some leather coming off it. Hasn't taken much of a beating just yet, but still a loose thread probably coming out of the seam that was taken out. Around the wicket, Iftikhar creating that angle. And getting a little bit of turn as well into Hassan Nawaz. Good finish to the over from Iftikhar. 2 done. Nurpur Lions 26 for none. Nisar coming in the attack to bowl the third over. So rapid changes for the UMT Markhor side as both the openers look solid and look progressive. And progressive has been their performance in this tournament. If you have a look at Imam, 13, 43, 45, 65. So he's progressed every game. And if this continues, we are in for a big partnership because the other man, Hassan Nawaz, also has been progressing. 22 in his first game, 30 in the second, 44 and 50. So both have grown in terms of runs, confidence, and the partnerships have become bigger. And that is why Nurpur Lions is winning games. They've been resurgent in the last couple of games. They have won that. They would love to continue the winning streak. Like I said, direct qualification for the final should be the first aim for all the 4 teams. Well, this is one of those days for UMT Markhor. The generally very reliable Nisar starts off with a wide. Yes, and the body language is also not very inspiring today from the UMT Markhor's team. It's very quiet in the circle. Normally they are very chirpy. They make lots of noise. They seem to enjoy the battle, but at the moment it's all very quiet. And he must be a happy man. Makkar bhai, sitting along with the other sports staff. Slip has disappeared. The wide-ish delivery. Imam didn't quite time it. What could be the reason, Salman? UMT Markhor generally a very professional outfit. They work meticulously on their preparations, their pre-game routines. They've started cold here. Yeah, and add to that that they wanted to bowl first. So having said that and got what they wanted, the response they would have liked would have been picking up early wickets. But on the contrary, it's 29 for none and we have just started the third over. This one is banged in and just comes back off the surface. Well played in the end by Hassan Nawaz. Nisar also has bowled well in this tournament. He's been economical and he has picked up wickets, done well with the bat. 2 for 21 is in his first game, 1 for 17 in the second and 3 for 23 in the third. No wicket for him in the last game that he played, which was the fourth one. But generally, he has been on target as he prepares to bowl the third delivery of his first over. And Hassan goes big. It's huge. And it's, I think it has hit on the mid-wicket boundary. The umpires definitely would need to check that, whether it's 4
or a 6. I think he didn't hit it cleanly. Normally he hits, the ball goes out of the park. It'll be interesting to see if it landed directly or it just bounced a little bit in front. Well, it's going and it's on the full, probably almost on the top of the Toblerone. So it will be the 6 signal from Faisal Afridi, who's still waiting for the official confirmation. Hassan Nawaz, like Salman said, generally hits them far. Probably scuffed it a little bit. We'll have a chance to have a look at that. But it has hit the skirtings on the full. Pretty conclusive. Yeah, sometimes you wonder what the confusion is. And there comes the decision. Finally, the 6 signaled. Shaji, you always remind me of things to eat. You just named the boundary rope Toblerone. Placed away. And at the moment, dining is Hassan Nawaz. Some loose stuff being dished out to him. And he is having some fun. Top of the bounce again, well controlled, well placed. And Hassan Nawaz is getting better game after game. You look at him and you say the boy is starting to progress. He's got things under control. And this one was played wonderfully well. Great use, just lifting himself up on the toes, onto the top of the bounce. And this one is flicked. And Nafe, well, not a convincing job from him. It was in his range to stop, but he was unable to do so. Another boundary. So runs coming thick and fast. It's raining boundaries here. I don't know what to say about this. Nisar conceding the second wide, this time wide enough for Nafe. Have to wait and see. Nafe, just a small little stride, not much of a footwork, and just parries it away. That should go on the score sheet for Nafe as well. Probably a genuine wicketkeeper would have been able to come across and save that. Once again, Hassan Nawaz looks very comfortable against the bouncing ball. A rarity if you are an Asian, and this is very good to see. And is also a very risky flick of the last delivery. So Imam back on strike, 11 of 5. On the other end, Hassan, 22 of 12. And then the extras also. There have been 12 wides so far in this innings, and we are only in the 3rd over. Change of pace, chance. Imam gets in comfortably. And a rollicking start for Nurpur Lions. They are 46 after 3. Plenty of clouds today in the sky and a few kites. That's been a tradition of Rawalpindi. No rain, no imminent chance of rain at least. And with the lights on, definitely bad light is not an option. Plenty of color in the crowd as well. Shot asking for trouble and smashed by Imamul Haq. What a start. 50 has been brought up for Nurpur Lions. Probably the fastest 50 of the tournament. As a pair, as opening pair, 50 runs. It's 3.1 overs. So a team 50 comes up in 19 legitimate deliveries. And I still wonder why Iftikhar has the ball in the hand. And the Nurpur Lions keep taking the advantage. Once again shot. And this time there was another boundary for the taking, but Imam missing this.
No protection in the deep on the offside. He only had to get through the infield. Imam is looking to hit it too hard, I guess. This time. Running hard. No, good ground coverage. A couple of fielders converged quickly on it. But this tactic of Nisar bowling the 1 over, Akif bowling the 1 over. And Iftikhar deciding to come on himself. This is, like you rightly said, the fastest 50 of the tournament. Once again, Hassan Nawaz looking very comfortable against spin as well. This is the 6, drops it short, and Imam rocks back and hits it flat over mid-wicket. This certainly has been a top start from the Nurpur Lions and a chance for this pair to make it the best power play of the tournament, as this one has been driven down the ground for an easy single. Back up, back up. Well, these two openers, like we just mentioned a while ago, has grown in stature, grown in confidence as an opening pair. 2 is the call. Running very hard is Hassan Nawaz. Probably won't come back. Just a single. The good start for Nurpur Lion continues. 56 for none after 4. इससे बेहतर आगाज नूरपुर लायंस की टीम को नहीं मिल सकता था। पहली गेंद पर इमामुल हक ने चौका लगाया और हसन नवाज ने आज भी वही किया है जो पिछले एक हफ्ते से करते चले आ रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट की सबसे कामयाब ओपनिंग पार्टनरशिप नज़र आती है। तमाम टीमों में से ही इन दोनों ने मिलकर अपना लोहा मनवाया है। मोहम्मद नवाज अब इसे तोड़ने के लिए कोशिश होंगे। ये मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करने के लिए आएंगे। अच्छी बॉलिंग करते रहे नवाज यहाँ आने के बाद, लेकिन एक ख़तरा मोल लिया गया है पावर प्ले में उनके साथ आने का। पेस बॉलर्स पर ज़्यादा चारा चला नहीं है इफ्तिखार अहमद का। मरीना इकबाल कमेंट्री बॉक्स में है, खुश आमदीद। शुक्रिया तारिक भाई। बिल्कुल दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, हसन नवाज, इमामुल हक। और जिस तरह फास्ट बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, इफ्तिखार के पास चांस और चॉइस कोई नहीं थी। स्पिनर्स को लाना चाहा उन्होंने ताकि थोड़ी सी पेस ऑफ हो सके। बोल्ड हो गए, इस बार फोर्स करने के लिए गए लेग साइड में और नवाज को लाने का फैसला सही रहा। उनने वक्त जाया किए बगैर हसन की विकेट उड़ा दी। थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे हसन इस मर्तबा। वो लेंथ थी नहीं जिसके लिए शॉट थी। एंगल थोड़ा सा आगे गिरा हुआ था और थोड़ा सा इनका वेट भी पीछे रहा है। अगर आगे से कनेक्ट करते तो शायद बेहतर रिजल्ट होता, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छे लग रहे थे हसन नवाज 24 बना के वापस। नूरपुर लायंस 56 for 1। शाहजेब खान वन डाउन आते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त पहले एक लेफ्ट हैंडर हैं इमामुल हक वहाँ,
इसे रोहेल नज़ीर को बुला लिया गया। ये टीमों की जो T20 चालें हैं ज़ाहिर है ये बदलती रहती हैं बिल्कुल हालात के मुताबिक, और होना भी चाहिए। कट करने को गए, जगह नहीं मिल सकी, फील्डर वहाँ पर तैनात थे। अच्छी बॉलिंग करते रहे मोहम्मद नवाज, एंगल क्रिएट किया, वहीं से टर्न करने में कामयाब हुए। नई गेंद पर आसान नहीं होता। मोहम्मद नवाज अच्छे T20 क्रिकेटर हैं। HBL PSL का जिन दिनों आगाज हुआ था मुत्तहिदा अरब इमारात में, ये बड़ी विकेटें लिया करते थे ग्लैडिएटर्स के लिए वहाँ। बहुत अच्छा सीज़न इनके लिए रहा, ऑल राउंड सीज़न। बैट भी परफॉर्म किया और पावर प्ले में स्पेशली इन्होंने ऑपोजिशन को हिलने नहीं दिया, अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद करते रहे, उन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। एक्सपीरियंस्ड हैं, अपनी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इनकी। Come on, Nawaz bhai, come on, Nawaz bhai. रोहेल नज़ीर को इससे पहले 2 बार बैटिंग का मौका मिला यहाँ, Come on, Nawaz bhai. बेतरतीब 16 और 3 बना सके। पोटेंशियल काफ़ी है रोहेल में, लेकिन कुछ टाइम हो गया इनसे बड़ी इनिंग्स अभी तक देखने को नहीं मिली। इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं। आज थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर हुए 1 डाउन पे, टाइम बहुत होगा, इमाम के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। फील्ड में थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही, रूम बनाने की कोशिश की थी, पहले लेग साइड पे गए, फिर शफल करके वापस आए। फॉलो ज़रूर किया था नवाज ने, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं उनको। 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए रोहेल, और आखिरी गेंद पे बाउंड्री हासिल की। नूरपुर लॉयंस 62, एक खिलाड़ी के नुकसान। Come on, boys, come on, boys. Come on, guys, come on. Shabash, 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 Bati bhai. Shabash, bhai. Come on, boys. इफ्तिखार अहमद बैट पर लगी, खासा आगे आ गए थे इमामुल हक, इसलिए अंपायर ने चुप साध ली। मुसलसल तीसरा ओवर कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद, और वो भी पावर प्ले में, और उसकी वजह इमाम की मौजूदगी है, लेफ्ट हैंडर की। इस बार 1 रन ले सकेंगे कप्तान इमाम। कप्तान को बॉलिंग कर रहे हैं। कोशिश ज़रूर होगी UMT मार्कोस की। ये पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे बाउंड्री हासिल की थी, विद द एंगल फायर इन किया था, आर्म बॉल फॉलो करना चाह रहे थे, लेकिन फिर रोहेल अपनी स्टांस में वापस आ गए और विद द एंगल हेल्प कर दिया था। पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं बना पाए जिस तरह की इनसे तवक्को की जाती है। आज एक अच्छा मौका है, अच्छी फाउंडेशन सेट हो गई हुई है नूरपुर लॉयंस की, यहाँ से एक लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए इन्हें। Bati bhai. Bowling, Bati bhai. हसन नवाज की विकेट गिरने के बाद एक खामोशी सी मैदान में छा गई है। पावर प्ले का जो रिकॉर्ड है यहाँ इस टूर्नामेंट में वो 66 का है, और ये अगर बल्ले से टकरा जाती तो ये रिकॉर्ड फौरी तौर पर टूट जाता। अभी भी टूट सकता है, 2 गेंदें बाकी हैं, 3 रन और दरकार हैं इसके लिए। शॉट को चेक किया, खासा दूर गिरा दिया था इफ्तिखार ने रोहेल नज़ीर के। अपने लिए खुद मुश्किल बना ली थी, लेकिन
इन द एंड इतने कंट्रोल में थे कि सिंगल हासिल कर पाए, वरना ये एक और नुकसान हो सकता था नूरपुर लायंस को। पावर प्ले की आखिरी 3 गेंदें थी, शायद इसलिए अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये कि स्ट्राइक इमाम को दें जो वेल सेटल्ड इन है। 11 के औसत से स्कोर हो रहा है। जल्दी कर गए और पहुंच गए। इमामुल हक अभी तक एक भी विकेट हासिल नहीं की इफ्तिखार अहमद ने इस साल टूर्नामेंट में। नूरपुर लायंस की टीम अपने पहले दोनों मैचेस हार गई थी, उसके बाद उन्होंने 2 फतवाहात हासिल की, 4 पॉइंट्स हैं और आज भी अभी तक उसका पलड़ा भारी है। तो आखिरी गेंद अब पावर प्ले की और यहाँ पर गेंद निकल गई 7 के ऊपर से 4 रन के लिए और इस तरह रिकॉर्ड भी टूट गया। साल पावर प्ले का 70 रन पहले 6 ओवर्स में बने। जैसे आगाज करते हैं हसन नवाज और इमामुल हक, आज सीधा उसी तरह किया। ये बहुत ही शानदार शॉट था डाउन द ट्रैक और उसके बाद जोन में मिली गेंद और हसन नवाज बिल्कुल नहीं झिझके उसको बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए। एक थोड़ा सा क्लासिक टच भी नजर आता है इनकी बैटिंग में। जो भी कोई खराब गेंद थी उन्होंने मेक श्योर किया कि बाउंड्री हासिल करें। इमाम दूसरे एंड पे बहुत ही जारहाना इनिंग्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहला नुकसान था। नवाज आम बॉल के साथ नुकसान उठाना पड़ा। नवाज को रोहेल ने ज्वाइन किया इमाम को और आते ही इनोवेशन देखने में नजर आई। इस बार उठा के खेल दिया था रिवर्स में और एक खिलाड़ी के नुकसान पे अब तक का सबसे हाईएस्ट पावर पे स्कोर पोस्ट करने में कामयाब हुए 70 नूरपुर लायंस। पावर प्ले में अब 4 ही फील्डर्स दायरे में रह गए हैं। पावर प्ले के बाद ये बड़ा शॉट खेला और यहां पर रन्स मिल जाएंगे 6। गेंद फ्लैट गई आखिर को। डीप मिड विकेट पर फील्डर लिया हुआ था लेकिन इमामुल हक ने उसकी परवाह की नहीं। एंगल के साथ ही इसे दे मारा। एंगल से नवाज को थोड़ा मोहतात होके करनी पड़ेगी बॉलिंग, क्योंकि ये एक इजी पाथ फ्लो है इमाम के लिए। घुटने को नीचे लगाया और लेंथ और लाइन भी मिल गई थी जिसकी वजह से ये स्लॉक स्वीप कर सके। थोड़ा सा आसान हो जाता है जब लेफ्ट हैंडर फेस कर रहे हो एक लेफ्ट आर्म बॉलर को, वो एंगल इजी हो जाता है। बाउंड्री चेक जरूर करेंगे कि कोई ये 6 रन से या 4। हाँ, ये दूसरा मौका है। ये टीवी अंपायर जो है उन्हें 4 या 6 का फैसला करना है। ये भी है खासा मुश्किल लगता है। अगर हाफ वॉली पर लगेगी तो जाहिर है 4 होंगे, लेकिन बाजार लगता है कि बेस में लगी जाके स्कर्टिंग के। ये पहला एंगल जो था ज्यादा मुनासिब था। जी मरीना, ये आप पे छोड़ते हैं। इस फैसले के लिए थर्ड अंपायर मौजूद जरूर है, लेकिन लग रहा है कि शायद इससे अगर फ्रेम आप देखें तो शायद यहाँ पे विद इन बाउंड्री ये बॉल बाउंस हुआ है। जी बिल्कुल, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे। अंपायर ने यहाँ पे जो शक का फायदा था फील्डिंग टीम की तरफ दिया और अच्छी रन औसत है। अभी भी यहाँ जो आसमान
बिल्कुल छुपा हुआ है बादलों में। रावलपिंडी में हम पिछले कुछ दिनों से हैं, यहाँ बादल आते हैं, हवा चलती है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं, उसका कोई इम्कान नहीं अभी। क्योंकि इन दिनों मरी में बर्फबारी होती है, और मरी में जो बादल हैं, आना जाना उतरना वो मामूल है। तो इन दिनों उसका कुछ कुछ असर जो है यहाँ भी हो रहा था। काफ़ी असर हो रहा है आज, सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा ज़रूर है। मैच की आप यहाँ दूसरा लेना चाहते हैं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन अच्छी दौड़। बर वक्त दोनों अपनी क्रीज से निकले, रोहेल नजीर बर वक्त मुड़े भी। बहुत अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, खेलते साथ ही ये अंदाजा कर लिया था रोहेल ने कि बिल्कुल इनर सर्कल के थोड़ा ही बाहर जाएगा, और सर्वर अफरीदी जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ लग के खड़े थे, उनके लिए बहुत लंबा ग्राउंड था कवर करने के लिए। अच्छी लाउड क्लियर कॉलिंग 2 रन्स के लिए। 3 रन्स जो हैं आज बने थे सुबह के वक्त एक मुकाबले में, लेकिन बहुत कम बनते हैं इस ग्राउंड पर 3 रन्स। स्वीप शॉट, अब रिवायती, पहले गैर रिवायती शॉट पर चौका पाया था, उल्टा स्वीप और स्विच हिट भी करते हैं। रोहेल नजीर विकेट कीपर्स का ये शॉट माना जाता है। ये स्वीप शॉट्स, पुल शॉट जो हैं, ये भी विकेट कीपर की खासियत होती। शाहज़ाद आज मिडिल ऑर्डर में आएंगे, और यहाँ ये मौका हो सकता था, गेंद जो है ये पैड से लगकर उछली, उससे पहले बल्ला लग गया था, लेकिन विकेट कीपर से दूर रही। 8 रन्स के साथ ये ओवर गया 78 पर है। फजा जो है उसमें मदद है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन नूरपुर लॉयंस के बल्लेबाजों ने सारे हमलों को आज नाकाम बनाया। इमाम इस वक्त 28 पर हैं, रोहेल 13 पर, खुशदिल, शाहजेब, उवैस, अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप है, इसमें शाहिद अजीज़ भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर। बिलावल भट्टी एक और ऑलराउंडर डोमेस्टिक क्रिकेट के, फिर से वापस आए। वैसे फ्लैश या और वहां एक टिपक आती हुई गई आकिफ की जानिब। बिलावल भट्टी जाने माने खिलाड़ी हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि पिछले 4 सालों में सिर्फ 3 T20 मैचेस खेले इन्होंने। मैच प्रैक्टिस T20 के लिहाज से कम रही है, लेकिन एक्सपीरियंस है, और ऐसे फॉर्मेट में एक्सपीरियंस भी काफ़ी मददगार साबित होता है। यहाँ पे पेस वेरिएशन करनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि नॉर्मली तेज़ गेंद करते हैं खिंची हुई लेंथ पे, और अभी तक ये देखने में आया है कि बैटर्स ने उस पेस को और उस लेंथ को बाउंड्री के पार ही पहुँचाया है। लेफ्ट हैंडर के लिए 3 फील्डर ऑफ साइड में, और पुल करने के लिए गए। यहाँ पर मौका है, फील्डर के लिए मोहलत भी है, और इफ्तिखार अहमद भी थे जो गलती ना करने वाले थे। तो बिलावल ने स्ट्राइक किया,
बॉलिंग क्रीज पर पहुंचते ही और शॉट ऑफ लेंथ, ये इनका रिवायती हथियार है, उसी पर चलता किया इमामुल हक को। इमामुल हक बहुत अच्छी निक में लग रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा अगर बैकफुट पे पंच करने जाते तो बेहतर था, क्योंकि बिलावल भट्टी का स्किड करता है बॉल। इतने लंबे कद के मालिक नहीं है, इतना ज़्यादा बाउंस मिलता नहीं जिसको पुल करने चले गए थे। नॉर्मली ये बहुत कंट्रोल में होते हैं, वेट भी थोड़ा पीछे था और हार्ड लेंथ से उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मिस क्यू हुई शॉट। और इफ्तिखार खुश होंगे क्योंकि ये एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं इमामुल हक। 28 बना के वापस। नूरपुर लायंस 79 for 2। UMT मार्खोर्स की शोहरत है कि वो कहीं से भी पलटकर मैच में वापस आ जाते हैं। आज भी वैसा ही करने के लिए कोशिश हैं। बिलावल भट्टी ने विकेट ली, उससे पहले नवाज आए, उनने भी अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की। शाहजेब खान अच्छे बासलाहियत क्रिकेटर हैं, नए आए हैं इस फॉर्मेट में। अराउंड द विकेट बिलावल भट्टी उनके खिलाफ जाएंगे। स्किड करती हुई आई, बल्ला टकरा गया था और वापस जाना पड़ा रोहिल नज़ीर को। अच्छे फील्डर हैं साथ। अच्छी बॉलिंग की है बिलावल भट्टी ने, अच्छी पेस से कर रहे हैं। और इमामुल हक के स्ट्रैप में फॉल कर गए। नॉर्मली अच्छा पुल करते हैं और इस मरतबा लिफ्ट करना चाह रहे थे। अगर हॉरिजॉन्टल बैट से थोड़ा सा चढ़ के खेलते तो नीचे को, तो शायद ये शॉट बेहतर लगती, क्योंकि वो लेंथ थी नहीं, स्किड भी हुआ गेंद। देखना ये होगा कि नूरपुर लायंस का मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। ओपनिंग पार्टनरशिप ज़्यादा इनकी चलती रही, सिर्फ एक खुश दिल शाह हैं। इसको फिर एक शॉर्ट बॉल कराई और 1 रन हासिल करेंगे। खुश दिल शाह के अलावा अभी तक रन्स के लिहाज से कोई ज़्यादा खतरख्वाह कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिली। तो अब क्या प्लान होगा और कौन इनमें से जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं। शाहजेब खान में ये सलाहियत है कि वो सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ अभी इनको जाना चाहिए बॉलर कि इनको पीछे पड़ना चाहिए। रोहिल नज़ीर सेट टाइम कि जो रवानी आई हुई है इस इनिंग्स में वो नहीं टूटनी चाहिए। 1-2 गेंदें आप देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन अब अच्छी बैटिंग पिच है। पहले मैच की भी निस्बत गेंद बेहतर बल्ले पर आ रही है और ये नहीं इनको भूलना चाहिए कि UMT मार्खोर्स की बैटिंग उनकी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए स्कोर को ले जाना होगा 200 की तरफ। या फिर इनको उससे पहले अपनी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। नूरपुर लायंस को अपनी बॉलिंग पे हो भी सकता है भरोसा। अच्छा अटैक है, 81 पर 2। The youngest and the How cutest fan. cute. I love this game.
Smashed away. Rohil Nazir getting an opportunity at number 3. Young Shahzeb coming out at number 4. More of them. All these kids, the families coming into the ground. That's the beauty of this tournament. All the entertainment and great weather. They don't mind if they sit in the cold. These are better seats, better view. They've really struggled with their bowling effort so far. Plenty of extras, another wide to go to that total. Absolutely. I think it's the extras that have really hurted them. 14 already. With 14 wides. Yeah, they've been 2 boundaries on the wide deliveries, yes, but still they've been all over the place, especially the fast bowlers. Mid-afternoon munch. What did you have for lunch, Ali? Yeah, we've been looked after very nicely here. It's had a good lunch. Just loving the cricket also. A very, very good routine with our commentary captain Salman Bhatt taking us out for a walk after whatever we eat. It's good. You were shying away from that walk, Ali. It's very cold. Very cold. Spare a thought for these spectators and players. Well, players keep themselves warm. Plenty of activity. Shahzeb has punched it straight down the ground. Clearing his front leg. That's his go-to technique when he's looking to go big. And that's how he usually plays. Creates that space for himself. Likes to give himself room. This is a good opportunity. He's got enough overs to just settle in and then look to go big. He's been given another opportunity by the Lions. He's a good player. That's the walk. There you go. Very smart looking Salman Bhatt. Marina joined in. Probably. I need a little bit more. That was earlier this morning before the start of play. The captain Salman Bhatt leading the way. He likes it in the morning. But yeah, looking good. What are they talking about? We're all talking about you, Ali. Haris also made a comment about your glasses. Stylish man, Ali Yunus. The very impressive youngster is onto the bowling crease. He's been very good with both bat and ball. Very impressive half century yesterday. Was taken for runs, so when he was bowling, he'll be a bit under pressure with this department of his game. Goes past the outside edge. 2 dots to begin with. That'll give him some confidence. Yeah, good start to his spell. I mean, we promoted up the order. Khushil Shah, Wes Zafar. Just to have that momentum going, maybe. They didn't want a youngster, maybe a Wes Zafar. Just to give him a little more responsibility with Shahzeb Khan. The hair, because of this, got big on him. Rohil Nazir played well though, but beaten by pace. Chance, direct hit gone. Amir Yamin's experiment didn't work out. Was Shahzeb, I beg your pardon, at the non-striker end.